Good morning, Vedhanshi. Yes, Vedhanshi, good morning. Good morning, ma'am. Anadi was the first one to write present, as of now missing. Hmm? Chalo, never mind. We are a little early, 1 minute more. Let's wait for 7:30. This part we had done yesterday, we finished here. Ma'am. This is the part. Yes, just read this. By the time, let others also join. Yes, Pachas, good morning. Good morning, ma'am. Hmm. Good morning, ma'am. Morning. This is what we did yesterday. The last one. You remember this complex which was formed? Lock and key. Yes, ma'am. Sure. That's nice. Chali, let's go further. Concept of activation energy. This is the next topic in enzymes. How do enzymes speed up a chemical reaction? Obviously, the moment we study about enzymes or catalyst, we just study that they generally speed up a chemical reaction. Yesterday, we had talked about an enzyme which speeds up an action. How many times? 10 million times. 10 10 million million times. times. And what was the name of the enzyme, my dear children? Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. Good. Carbonic anhydrase, ये वाला. ठीक है? So ये ऐसा क्या है इसके अंदर? That it can actually speed up a chemical reaction. This is what we are going to study now. See. Understand this word activation energy. Additional energy required to start a chemical reaction. Normally what happens is chemical reactions, most of the chemical reactions are spontaneous. They happen on their own. But there are certain chemical reactions बेटा जो normal अपने आप नहीं होते हैं. Like I always give you example कि आप चाय बनाते हो. Despite the fact कि आप milk ले लो, sugar ले लो, tea leaves ले लो, water ले लो, सब mix कर लो, tea बन जाएगा without giving heat energy. Tell me, heat energy के ma'am. बिना चाय नहीं बनेगा. Exactly. So you have to give some additional energy so that the reaction takes place. Because when you're making tea, that energy is given in the form of heat. Similarly, plants को भी energy चाहिए, photo energy ले लेते हैं. So normally, to start a chemical reaction, some energy is needed, additional energy is needed. That additional energy is called activation energy. What is that energy called? Activation energy. Energy. Reactants active हो जाएंगे, energy मिलते ही, so chemical reaction start हो जाएगा. So this energy is what we call as activation energy. Understand this word. In an exothermic or an endothermic reaction, the substrate must go through a much higher energy state. This is called as the transition state energy. ये देखिए. Substrate. ये आपका substrate है. ठीक है? This must higher energy state. तभी जाकर के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, इसके ऊपर एंजाइम एक्टिवेट कर पाएगा. So that high energy state of the substrate is called transition state energy. बेटा इन दोनों में फर्क लेके चलना थोड़ा सा. एक्टिवेशन एनर्जी तो पूरा ओवरऑल केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. बट सबस्ट्रेट का जो हाई एनर्जी स्टेट होता है, आपका सबस्ट्रेट जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में होता है. ये अब एक बार फिर से देख लेते हैं. ये वाला जो आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये इफ यू कैन सी दिस वन, ये अगर हाई एनर्जी स्टेट में होगा तभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा. सो व्हेन दिस स्टेट कम्स इन द सबस्ट्रेट की वो हाई एनर्जी फॉर्म में है, then that state or that condition or that form is called as transition state energy.
What is this energy called as? Transition state energy. Very good. So activation energy is the difference between the average energy of the substrate and the transition state energy. आप इसको बस ऐसा समझ लीजिए. Let's talk about the language period. मतलब English, Hindi. तो energy level normally I've seen बच्चों का थोड़ा excitement level, energy level low रहता है. Let's talk about the games period. Games period में automatically the children are at a high energy state. तो simple तरह से याद करिए. You are a substrate. So games period में आप कौन सी state में रहते हैं? Transition state में. And normal classes के अंदर जब normal period चलते हैं, especially जब written work दिया जाता है, तो आप average energy state में रहते हैं. Similarly आपका substrate है बेटा. Normally तो वो कौन सी state में रहता है? Average energy state में रहता है. But जैसे ही chemical reaction में participate करने के लिए जाएगा, तो उसमें एक additional energy state आ जाती है. उसके अंदर ज्यादा energy है. उस condition में that energy जो extra उसके पास आ गई है, which is there, वो अब high energy पे चला गया. That is transition state energy. ठीक? और इन दोनों का difference जो है, that is activation energy. What is it called? Activation energy. इसको एक बहुत simple example से एक बार और समझते हैं. Supposing there is a period where I tell you to write 40 pages and आपका energy level जो है वो 40 kilojoules है. 40 kilojoules. तो ये तो हो गई भाई आपकी average energy. 40 kilojoules क्या हो गया आपका? Average energy. Average energy. जो नॉर्मल रहता है एवरेज वही तो होता है जो नॉर्मल होता है 40 किलो जूल्स. अब नेक्स्ट गेम्स पीरियड आ गया. द सेम फेसेस व्हेन दे कम आउट ऑफ द क्लासरूम्स 60 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी दिख रहा है. अब आप लोग हाई स्टेट में हैं, हाई एनर्जी स्टेट में हैं, तो आई विल से माय चिल्ड्रन आर एट व्हाट स्टेट ऑफ एनर्जी? ट्रांजिशन स्टेट. व्हिच स्टेट? Transition state energy. Transition. Average state was 40 kilojoules. Transition state is 60 kilojoules. So activation energy कितनी आई आपके अंदर बताइए? 60 minus 40 कितना हो गया? 20 joules. Yes. Now see this. Activation energy is the difference between the average energy and the transition state energy. Let us do once again. At home जब आप डिनर पे बैठते हैं, मम्मा से लौकी बनी है, टिंडा बना है. What else you people don't like? Kaddu is there. So you're eating food with a very low disinterested energy level. Supposing आप average energy पे खा रहे हो and that is 20 kilojoules. Fine. All of a sudden you're served with, immediately after that you're served with something of your favorite, like an ice cream or a sweet dish or whatever you like. आपके अंदर एकदम एनर्जी आ जाता है. सो आप एवरेज एनर्जी से कहाँ चले गए? विच स्टेट? Transition state. So average energy was 20 kilojoules when you were eating Lokis and tenders, and now transition state हम मान लेते 50 kilojoules पे आ गया. तो activation energy कितना हुआ बेटा? 30 kilojoules. 30 kilojoules. Very good. So activation energy is the difference between average energy and बताइए. Transition energy. Transition energy. Transition energy. Very good. So I hope you understood. Activation energy, additional energy जो आ जाता है जब आप कोई reaction में participate करने जा रहे हैं substrate, like you get some additional energy when something of your favorite comes in. So that extra energy which you are getting is your activation energy. So that is why when we define activation energy, हमने word use किया additional energy. या आप ये भी बोल सकते हैं simply that this is the difference between average energy and transition state. Last time I'm again asking average energy. चलिए, let's say mama says okay, let's go to a relative's house. Not interested. Fine. And especially when there are no children at the relative's house, but जाना पड़ेगा. You have to stay there. So average energy आपकी बहुत low चली गई, 15 kilojoules. उसके बाद mama says okay, you can go to your friend's house after this. So immediately from average energy state, you will come to what state? Transition state energy. Yes, transition state. 10 kilojoules average state था, एकदम से energy आ गया. Yes, we are going to go transition state. This is 30. So बताइए activation energy कितना हुआ?
टेल मी कितना हुआ? एवरेज एनर्जी 10 था, रिलेटिव्स हाउस जा रहे हैं, फ्रेंड के घर पे जाने के लिए 30 हो गया ट्रांजिशन स्टेट। सो एक्टिवेशन कितना हुआ बेटा? 20. 20 kilo. 20. यस यस। सो इफ यू सी बेटा, ये एडिशनल एनर्जी बड़ी प्रॉब्लम कर देती है, स्पेशली लाइक आई टोल्ड यू फॉर मामा। मामा ने समथिंग शी हैज मेड व्हिच यू डोंट लाइक टू ईट, सो शी हैज टू अरेंज फॉर एन आइसक्रीम, ताकि आपकी वो एक्टिवेशन एनर्जी आ सके, ताकि आप एवरेज एनर्जी से कौन सी स्टेट में जा सके? Transition. state. Transition and Yes. Now just tell me, in place of, let's imagine the same condition. Locket India के बाद you had an ice cream. Locket India में you were average energy. Ice cream में you were transition state. अब in place of Locket Indias, if I replace it by something that you like, राजमा चावल, कढ़ी चावल, anything which you people generally like. So बेटा अगर transition state 50 था and Locket India 10-20 था, तो राजमा चावल 30 पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एवरेज एनर्जी आपकी टिंडे के 10 की बजाय राजमा पे आई तो कितना हो गया? 30 हुआ नहीं हुआ? व्हाट डिड आई डू? मैंने क्या करा? जल्दी बताइए, जल्दी करो। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। कैसे कम किया? अर्लियर व्हेन यू वर ईटिंग टिंडर्स यू वर ऑन 10 जूल्स एंड आइसक्रीम पे ले जाने के लिए 50 जूल्स। तो डिफरेंस कितना था एक्टिवेशन एनर्जी का? 50 and 10 40 joules. 40 joule. यस, तो डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन जो आ रहा था वो 40 आ रहा था। इन प्लेस ऑफ लॉकीज एंड टिंडर्स लेट मी रिप्लेस इट बाय समथिंग यू लाइक, राजमा चावल और कढ़ी चावल। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 30 किलो जूल्स एंड जाना तो वहीं पे है आइसक्रीम पे 50 किलो जूल्स। So 30 to 50, what is the difference now? What is the activation energy? Tell me, what is the 20. activation? 20. So exactly what I did, enzymes also do. They lower down the activation energy. Okay. Now, when you are told that come for dinner, have rajma chawal and then have ice cream. So the speed with which you come to have your dinner is obviously more than, अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी कम है या ज्यादा है इस केस में? राजमा चावल के बाद आइसक्रीम खा रहे हैं, सो एक्टिवेशन एनर्जी लो रहेगा, डिफरेंस या हाई रहेगी? जल्दी बताओ। Low. Low. Activation energy is low. Very good. So speed high रहेगी. The speed with which you come, कि चलो चलो खा लेते हैं, let's have good dinner followed by ice cream. So the speed with which you come for dinner is going to be more or less? More. Yes. Very good. And एक दूसरा केस देखते हैं, when you are already told कि बेटा आ जाओ, come and eat Lockies and Tinders. So the speed with which you will come, activation energy कितनी है? आप एक्टिव हो जाओगे कि चलो चलो लॉकी टिंडा खा रहे हैं। Obviously there are some exceptions with due respect to Locky and Tinda. I'm not disregarding any vegetable, but एक general example बेटा, 10 किलो जूल्स एनर्जी रह जाता है ना, तो बहुत जल्दी भाग के जाते हो, चलो चलो लेट्स गो एंड ईट। एक्टिवेशन एनर्जी हाई और लो? जल्दी बताओ, डिफरेंस देखना है हमको। एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगा या लो होगा? 10 किलो जूल से 50 किलो जूल्स पे जाना है आपको। High. High. हाई, बट याद रखिए स्पीड, जिस स्पीड से आप जाओगे टू हैव योर डिनर would be automatically low. So beta, there is an inverse relationship between the speed of a reaction and the activation energy. देखो इसको समझे। The lower the activation energy, okay, the speed will be higher. Lower, enzymes ने क्या करा? Activation energy को कम कर दिया, तो obviously speed क्या हो गई? High हो गई. All you need to remember is there's an inverse relationship between activation energy and the speed of a reaction. Now just tell me, there is reaction 1 where activation energy is 10 kilojoules. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। reaction 1 activation energy 10 kilojoules है, reaction B activation energy 30 kilojoules है। बताइए किसकी स्पीड ज्यादा होगी, reaction A और reaction B? Reaction A. Reaction A. गुड। अब इसको हम देखते हैं। ये देखो, ये हमारा सबस्ट्रेट है जो एवरेज लेवल ऑफ एनर्जी का होता है। ये
मतलब दिस इज व्हाट एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं हम आपको, दिस इज व्हाट एनर्जी, Average energy. yes, this is average energy. Now extra energy, ये तो हमारा हो गया when we are eating लौकी and tenders. अब हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, देखिए कितनी एनर्जी बढ़ जा रही है हमारी, इस स्टेट पे आ गए हम, हाई एनर्जी स्टेट. व्हाट इज दिस हाई एनर्जी स्टेट कॉल्ड एज? Transition state. Very good, transition state. And we said difference between both of them, यानी यहाँ से लेकर के जो बड़ा वाला एरो दिख रहा है, ये पूरा डिफरेंस, दिस एनर्जी इज व्हाट एनर्जी? Activation energy. Activation energy. Yes, beta. So this energy difference is called what? Transition state and average state के बीच के difference को क्या बोलते हैं हम लोग? Activation Activation energy. तो अगर आपने एंजाइम यूज नहीं करा बेटा, तो एक्टिवेशन एंजाइम इतना सारा डिफरेंस इतनी ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी का. बट अगर आपने एंजाइम यूज कर लिया तो ये आपकी एवरेज लेवल है, ये आपकी एक्टिव ट्रांजिशन स्टेट है. तो आप देखो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम लो हो जा रही है या हाई हो जा रही है? Low. बताइए, लो हो रही है या हाई हो रही है बेटा? देख के बताओ. Low. वेरी गुड. सो एंजाइम्स, ये ग्राफ को भी ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली कर लेंगे. एंजाइम्स एक्चुअली लोअर डाउन द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी. ये कौन सी लेवल थी जल्दी बताइए? ये वाला जो लेवल है हमारा, Average. Activation energy. ये नहीं बेटा, दिस डॉटेड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल वन, व्हाट इज दिस लाइन? Average. Average Average. energy. वेरी गुड. एंड ये हाई एनर्जी स्टेट पे चले गए, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन एंजाइम नोन एज? सबस्ट्रेट, सॉरी. Transition state. The difference between the transition state and the average state, what is this known as? Activation energy. Yes. Activation energy without enzymes is very high, but when we use an enzyme, activation energy high हो जाता है, low हो जाता है बेटा? Low. Yes. Low. और enzyme का low होते ही आप देखिए प्रोडक्ट कितनी जल्दी बन रहा है. ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट अगर इतना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, काफी टाइम लेगा. एंड अगर हम एंजाइम यूज करा हमने तो देखिए प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है या देर से बन रहा है इस स्टेट में? विद एंजाइम जल्दी बन रहा है या विदाउट एंजाइम जल्दी बन रहा है प्रोडक्ट? देख के बताइए. सी, ये पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तब प्रोडक्ट बनेगा. एंड जब आप एंजाइम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, इमीडिएटली प्रोडक्ट बनेगा. सो बेटा, the higher the activation energy, the lower is the speed. The lower the activation energy, the higher is the speed. There's an inverse relationship between them. There are some other factors also which affect the enzyme activity. Temperature and pH. Second is the concentration of the substrate, and the third is the presence of an inhibitor. What do you mean by inhibitor? What is an inhibitor? Tell me, bachas, what is an inhibitor? क्या होता है ये? Any idea? स्पीड ब्रेकर होते हैं बेटा रोड पे? यस और नो? Yes, ma'am. वो आपकी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं? एक्सेलरेट मतलब बढ़ा Ma'am. देना. Inhibit. यस, इनहिबिट. सो एनीथिंग जो आपके एक नॉर्मल प्रोसेस को स्लो करता है, बीच में एक ऑब्स्टिकल बन जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन इनहिबिटर. व्हाट इज इट कॉल्ड? इनहिबिटर. Like a smooth class is going on, there is an indisciplined child जो बार बार क्लास में शोर करते हैं, तो वो क्या है? इनहिबिटर है कि नहीं है? बताइए. Would you consider that child as an inhibitor? Because obviously वो क्या कर रहे हैं? नॉर्मल जो हमारा स्टडी का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर रहे हैं. So remember, inhibition, slowing down, obstruction. So these are the three factors I'll be taking up in detail: temperature, pH, and then we'll have concentration of the substrate and presence of inhibitor. Temperature को समझते हैं, pH को पहले. जल्दी से रीड करिए, ग्राफ को ऑब्जर्व करिए. Let me explain it to you.
Did you understand something? What is going on? Peter, today is Wednesday. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. I'm very poor when it comes to remembering weekdays. हाँ जी बच्चे, थोड़ा बहुत whatever you understood, share it with me. What is happening over here? देखो बेटा, optimum temperature and optimum pH. What do you mean by the word optimum? Suitable, most suitable. ठीक है, हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच होता है. लाइक सबका आप लोगों का एक ऑप्टिमम टाइम होता है टू स्टडी. ऑप्टिमम मींस जब आपका प्रोडक्टिविटी बेस्ट रहता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑप्टिमम. सम स्टूडेंट्स स्टडी लेट एट नाइट बिकॉज उनको लगता है हम रात की पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है. दैट मीन्स देयर ऑप्टिमम टाइम, मोस्ट सूटेबल टाइम वो रात में है. प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है. देयर आर अदर्स जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं, सो उनका ऑप्टिमम टाइम अर्ली मॉर्निंग हो गया बिकॉज प्रोडक्टिविटी जो हम भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा आ रहा है. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच का मतलब समझ में आया. द मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर एंड द मोस्ट सूटेबल पीएच. सूटेबल का मतलब क्या? जब प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो. दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑप्टिमम. सो हाईएस्ट एक्टिविटी बेटा, every enzyme shows at what optimum temperature and optimum pH. Like as I said, सबका अलग अलग होता है. Enzymes का भी, every enzyme has its own optimum temperature and its pH. Activity declines below and above the optimum value. अगर हम ऑप्टिमम वैल्यू से ऊपर चले जाते हैं या नीचे कर देते हैं टेम्परेचर एंड पीएच को, सो ऑब्वियसली एक्टिविटी कम होगा या ज्यादा हो जाएगा. यू स्टडी वेरी वेल, अर्ली मॉर्निंग आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बट आई से नो अर्ली मॉर्निंग नहीं पढ़ेंगे आप लेट नाइट पढ़िए. सो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा या कम होगा बेटा अगर मैं आपको ऑप्टिमम से हटा hours, the productivity is not going to be good. So beta activity slows down when optimum value से ऊपर जाएंगे या optimum value से नीचे आएंगे. Low temperatures पे जाते ही enzymes temporarily become inactive. At low temperatures enzymes become inactive. अगर optimum से बहुत low चले गए तो enzyme active ही नहीं होंगे. And अगर आप बहुत high temperature पे चले जाएंगे तो enzymes they get destroyed. Because enzymes are what? Proteins. You remember we said all enzymes are proteins, but all proteins are not. क्या पढ़ा था? When we started the enzymes, we said all enzymes are proteins, but all proteins are not. Enzyme. Right. So I hope you agree and remember that enzymes are proteins. So high temperature पे जाके enzymes destroy हो जाते हैं because proteins they get denatured by heat. Denaturation हो जाता है, bonds break कर जाते हैं उसके. So हमने क्या समझा बेटा? Every enzyme has its own suitable temperature and suitable pH. That is known as what? कौन सा temperature and कौन सा pH बोलेंगे उसको? Optimum temperature and pH. Optimum. And if the temperature and pH are either increased or decreased from the optimum value, बताइए एक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? It will decline. ऑप्टिमम से, yes exactly, ऑप्टिमम से अलग कर दीजिए, so it's obviously going to decline, it's going to go down beta. Now one more very important thing that we have done, if we put an enzyme at a very low temperature than the optimum temperature, so enzymes they become, what happens to the enzymes? They become inactive. Temporarily inactive. टेम्परली इनएक्टिव. वेरी गुड. अगर आप नॉर्मल इमीडिएटली ऑप्टिमम पे लेकर के आएंगे तो वापस एक्टिव हो जाएंगे. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ब्रिंगिंग एन एंजाइम टू लो टेम्परेचर एंड टेकिंग एन एंजाइम टू हाई टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पे ले जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसे प्रॉब्लम नहीं है? आप जैसे ही टेम्परेचर को ऑप्टिमम करेंगे इमीडिएटली द एंजाइम विल अगेन बिकम एक्टिव. प्रॉब्लम है हाई टेम्परेचर पे ले जाने पे. Supposing you take an enzyme to a very high temperature than its optimum temperature.
So will it become temporarily active या कुछ और होएगा उसके अंदर? Tell me. अभी It will पढ़ा get था. destroyed. Yes, beta, it will get destroyed. So even if you bring back to optimum temperature, कुछ नहीं होगा. So where, in what conditions do enzymes get destroyed? They get destroyed when they are brought to a temperature which is comparatively very high than what temperature? Optimum Optimum temperature. temperature. Optimum temperature. Very good. And lower temperature पे अगर हम ले जा रहे हैं तो temporarily only what will happen? Temporarily Enzymes they'll are temporarily Temporarily inactive. inactive. Temporarily inactive. Very good. Good. Now let's do this. I hope you've understood this. ये यहाँ पे देख लीजिए. This is the optimum pH. ये optimum pH. Low temperature, high temperature, sorry, pH है ये, and this is the temperature. सबसे maximum जहाँ productivity है at this point, that means this is optimum. Factors affecting. Inorganic catalysts work at high temperature and pressure. In the beginning only I said organic है तो enzyme है, inorganic है तो catalyst है, function दोनों का same है बेटा. Inorganic catalysts, they work at high temperatures and pressures, but enzymes, they get damaged at high temperature, that is more than 40 degrees Celsius. We just talked about this. If we take it to a higher temperature, 40 degree के बाद, what will happen to enzyme activity? They will get damaged. Enzymes get damaged. Thermophilic organisms have enzymes which are stable at high temperatures, somewhere up to 80 to 90 degrees Celsius. What are thermophilic organisms? Guess करिए बेटा. What are thermophilic organisms? बेटा there are certain organisms जो बहुत high temperature पे survive करते हैं. This is one example. 100 degrees Celsius से भी ज़्यादा. They even survive boiling point of water से भी ज़्यादा पे ये survive कर जाते हैं. Such kind of organisms, what are they called as? Thermophilic organ. Thermophilic organisms. Thermophilic. Reason is कि इनके enzymes ऐसे होते हैं that they do not get destroyed. They do not get destroyed at very high temperatures also. आपने lactobacilli का नाम जरूर सुना होगा. Yes, ma'am. Yes. Yes, This is what lactobacilli. This is the best example of thermophilic bacteria. So we know what is a thermophilic organism, and the example would be what? Tell me which bacteria? Lactobacillus. Lactobacillus. Yes, bacha. So they can survive at very high temperatures. So these kind of organisms, we call them as thermophilic organisms. So normal enzymes तो बेटा जो होते हैं वो 40 डिग्री तक एक्टिव रहते हैं. 40 डिग्री के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं, denature हो जाते हैं. Only there are some special enzymes in special kind of organisms, thermophilic organisms. वो जो enzymes हैं वो उनमें क्या नहीं होता है, उनमें enzymes destroy नहीं होते हैं बेटा. ठीक है. Thermophilic enzymes का मतलब अब समझ में आ गया. Those enzymes which remain active above 80, above 100 degrees centigrade also. They resistant बेटा, बहुत resistant होते हैं ये. High temperature पे भी optimum इनका बना रहता है. Now, concentration of the substrate. Temperature is okay. Let's move on to the next one. With the increase in the substrate concentration, the velocity of the enzyme action rises at first and reaches a maximum velocity. ये देखिए. This is something like हम खाना खा रहे हैं. खा रहे ज्यादा खाया और एनर्जी आ गया, और ज्यादा खा लिया और एनर्जी आ गया. मतलब आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन राइजेस, एकदम बढ़ जाएगा आपका वेलोसिटी. ज्यादा खा रहे हैं, इतना ही खा सकते हैं बस. देयर इज अ लिमिट जितना आप खा सकते हैं. दिस इज नॉट एक्सीडेड बाय फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. ओके. No free molecule binds to with additional substrate molecule. इसका मतलब समझ लीजिए. Supposing there are 15 chairs in the class. ठीक है. How many chairs are there? 15. आप chairs को enzymes मान लीजिए.
Is it okay for everybody? We had 15 chairs in our classroom, and these 15 chairs, let us assume them as enzymes. Now I have sent 15 students in the class. The students are substrates. Suitable combination है, enzyme and substrate combine कर जाएगा. Every student is getting a chair. सब कुछ ठीक ठाक है. Enzyme plus substrate complex बन गया हमारा. Now I say नहीं और भेज देते हैं. Chairs तो 15 है, enzymes तो 15 ही है, but I have sent 30 students. अब वो 30 स्टूडेंट्स का क्या रोल है बेटा? बताइए. कुछ नहीं, खड़े रहेंगे ना? विल दे गेट अ प्लेस टू सिट? No, ma'am. नो, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एन एंजाइम. तो कॉम्प्लेक्स तो बनने का कोई मतलब ही नहीं है. एग्जैक्टली यही चीज होती है बेटा. एक लेवल तक तो ठीक है. लाइक यू हैड 15 चेयर्स, आपने 5 स्टूडेंट्स भेजे, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितने बने? 5 बने. एवरी स्टूडेंट सिटिंग ऑन 5 चेयर्स. ऐसे चलो बहुत अच्छा, 5 कॉम्प्लेक्स बन गए, 5 और बच्चे भेज देते हैं. सो वी सेंड 5 मोर. नाउ हाउ मेनी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस विल बी फॉर्म्ड? 10. 10. वेरी गुड. I said, wow, 10 हो गए, चलो और ये तो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और भेज देते हैं. Then I sent another 5. I had to keep in mind that I had only 15 chairs. That means I had only 15 enzymes in the body. So I have already sent 15 students. So कितने substrate complex already बन चुके? 15. 15. 15. Now I become greedy. I said, wow, so many complexes I'm getting. Let me send another 15 students. You think I'm going to get 30 enzyme substrate complexes? No, No, ma'am. No, ma'am. Because enzymes are only, enzymes कितने थे सिर्फ? 15. 15. वेरी गुड. सो 5 से 10 तो हुआ, 10 से 15 भी हुआ. दैट मीन्स इनिशियली तो इंक्रीज हो जाएगा, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल ये स्टॉप कर जाएगा. प्लीज सी ओवर हियर. दीज आर योर सबस्ट्रेट्स, एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स. ये छोटा वाला सबस्ट्रेट है, बड़ा वाला एंजाइम है. ये सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर फिट हो गया. हर बच्चे को अपनी अपनी चेयर मिल गई. और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये वो एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो क्लास में खड़े हैं. ये देखिए, आप कितने ही बच्चों को खड़ा कर दीजिए. सी ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग. लो सबस्ट्रेट, each substrate is getting its own enzyme. देखिए, substrate is fitting into the enzyme. But if I increase the high substrate level, you can see very few are getting enzymes. बाकी सारा free substrate है, which will not be a part of the enzyme substrate complex. So what did we study? With the increase in the substrate, the velocity of the action will first rise. Velocity maximum तक पहुंच जाएगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 एंजाइम्स हैं बेटा, तो 5 ही कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं. सो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी उसको Vmax बोलते हैं. व्हाट इज द टर्म कॉल्ड एज? Vmax. So if I go back to my example of chairs and students where I had get 15 enzymes of 15 chairs, what is the value of my Vmax? How many? 15. Very good, very good. So this is not exceeded by further rise in concentration because enzymes molecules are fewer than the substrate molecules. अब हमारे पास एंजाइम है ही नहीं है जो एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अटैच कर सके. इज इट ओके? सबस्ट्रेट का concentration point is clear. Now I'll move on to inhibitors. I told you inhibitors क्या होते हैं? जो काम बिगाड़ देते हैं, काम को स्लो कर देते हैं, they're inhibitors. Let's see this. I think this will be enough for today. The binding of specific chemicals shuts off the enzyme activity. This is called inhibition. There are certain chemicals, like we gave you an example of naughty students in the class. वो खुद भी नहीं पढ़ते, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते हैं. So they shut down the activity of the enzyme also. खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं, enzyme की activity को भी shut down कर देते हैं. These chemicals are known as, what are they called as? Inhibitor. Yes. Inhibitor. अब आप ये सोचिए, वो जो नॉटी वाला बच्चा है जो क्लास डिस्टर्ब करता है, उसको आपके बेंच पे बिठा दें, ओके? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. So that condition is competitive inhibitor. You will actually have to compete to study with yourself कि कैसे पढ़े, तो इतना पास आके बैठ गए. The inhibitor is closely similar to the substrate. The inhibitor which is closely similar to the substrate is called competitive inhibitor. Let me give you another example. ज़्यादा better रहेगा. Supposing there is one child who disturbs the class and there is a new admission who और भी शैतान है. दोनों में competition होगा कि कौन ज़्यादा क्लास को disturb करेगा? होगा नहीं होगा? You must have seen it's very common in classrooms. So this kind of inhibition is known as competitive inhibition. And ये दोनों शैतान बच्चे हो गए हमारे competitive inhibitors. Problem क्या है?
they compete with the substrate for the binding site of the enzymes. अब binding site तो enzyme में एक ही होती है बेटा. You're getting what I'm saying? और bind करने के लिए दो लोग हो गए. ये आपका enzyme है, ये आपका अच्छा वाला बच्चा है substrate, ये हो गया inhibitor, but place तो एक ही है. Only one thing can attach to the enzyme. या तो substrate attach करेगा या कौन attach कर सकता है? Tell me the second case which has come into the scene. What is this? Inhibitor. Inhibitor. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज जो एम्प्टी प्लेस था सुटेबल पॉइंट था जहाँ अटैच होता है वहां पे एंजाइम अटैच हो रहा है. सो दिस इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. There is no competition between the substrate and the inhibitor because substrate is binding with the enzyme. यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है. Enzyme, substrate, inhibitor. Substrate तो बेचारे यहाँ पे रह गया and enzyme के साथ किसने bind कर लिया? देखिए, what is this? Inhibitor. Inhibitor. So this complex which you get is not, this complex is enzyme inhibitor complex, and this kind of inhibition is known as which inhibition? Competitive inhibition. Very good. Okay, let's do it again. There are certain chemicals which actually stop the activity of enzymes also. They are known as inhibitors. Let us talk about the case where inhibitor का presence तो है, but वो bind नहीं कर पाया. Bind तो substrate ही कर रहा है enzyme से. So that kind of inhibition is known as competitive or non-competitive. 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 And second case में दोनों में competition हुआ. Substrate could not attach to the enzyme. Rather, what has attached to the enzyme, beta? Inhibitor. Inhibitor. So what would you call this as? Competitive inhibition. Competitive inhibition. देखो छोटा सा एग्जाम्पल है. Malonate is similar to the substrate succinate. ये malonate and succinate. So it inhibits succinate dehydrogenase in the following reaction. ये आपका एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है. तो यहाँ पे हमारा इनहिबिटर अटैच हो गया. ये वाला सबस्ट्रेट था हमारा, ये वाला जो सबस्ट्रेट था वो था सक्सिनेट. तो सक्सिनेट अटैच होना चाहिए था लेकिन सक्सिनेट नहीं हुआ. ठीक है बच्चा. मैलोनेट इज द इनहिबिटर. मैलोनेट अटैच हो गया यहाँ पे जाकर के. तो ये ऑब्वियसली एंजाइम को भी क्या करेगा? इनएक्टिव कर देगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अटैच किसको होना था? व्हाट वाज द सुटेबल सबस्ट्रेट? ये बताइए. हाँ, सक्सिनेट. क्या अटैच होना चाहिए था? टेल मी. सक्सिनेट. Succinate. एंड उसकी जगह इनहिबिटर आ गया मैलोनेट. Inhibitor is malonate. So what will happen? It will stop the activity of the enzyme. Competitive inhibitors are used to control bacterial pathogens. Normally, ऐसा नहीं है that they are always harmful. We control bacterial pathogens. Chale, that's all for today. We'll